Student, in previous lecture, we discussed about data encryption standard and data structure of data encryption standard and what is the multiple data encryption standard. Now, in this video lecture, we discuss about mode operations like electronic code book and cipher block chaining (CBC). So first, we discuss some important point like modes of operation. Block cipher encrypt fixed size block, that is data encryption is standard 64 bit block with 56 bit. तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन यूज करते हैं वो फिक्स्ड साइज ब्लॉक के लिए यूज करते हैं. एज ए एग्जांपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो केवल 64 बिट ब्लॉक्स एंड 56 बिट की को यूज करके इंक्रिप्ट करता है. दूसरा पॉइंट हम रिमेंबर करेंगे, नीड सम वे टू इंक्रिप्शन ऑफ डिक्रिप्ट आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ डेटा इन प्रैक्टिस. So NIST SP 838 defines 5 modes. इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है डिफाइन किया 5 modes है. ब्लॉक एंड स्ट्रीम मोड ईच जो कंटेन करता है 5 मोड में ब्लॉक होंगे, स्ट्रीम्स होंगे. टू कवर ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड विद एनी ब्लॉक साइज. So use of modern block cipher. Symmetric key encipherment can be done using modern block ciphers. Mode of the operation have been devised to encipherment text any size employing either DS or EM. कहने का मतलब कि अभी जो हम अप्लाई कर रहे थे साइफर ब्लॉक वो फिक्स्ड साइज के लिए यूज कर रहे थे. एग्जांपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसपे 64 बिट अप्लाई करके 56 बिट की के थ्रू डेटा को इंक्रिप्ट करते थे. बट using the different modern blocks cipher we use the variable length of plain text like that. Mode of operation ECB electronic code book, CBC cipher block chaining, CFB cipher feedback, OFB output feedback, CTR counter. So the simplest mode of operation is called electronic code book ECB mode. तो सबसे simplest mode है. In this mode, we encrypt the plain text like encryption C of I equal to array of E of encryption of K key P of I. अगर कोई plain text given है PI तो उसको केवल K की से encrypt करके cipher text achieve कर सकते हैं. E encryption, P for plain text block I, K is the secret key, CI ciphertext block I means this block number messages are divided several number of blocks. So I define here the number of blocks. Suppose P1 n bits. Apply the K key encrypt and n bit ciphertext find as a C1. Similarly P2 n number of bits पे K की अप्लाई किया, एनक्रिप्ट करने के बाद n बिट्स आप फाइंड आफ्टर द साइफरटेक्स्ट C2 डैश 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 Pn ब्लॉक पे n बिट नंबर ऑफ n बिट है, K की अप्लाई किया, एनक्रिप्ट करके C एनक्रिप्ट हो गए, फाइंड हुआ. सिमिलरली वी यूज द डिक्रिप्शन, अप्लाई द साइफरटेक्स्ट n बिट पे डिक्रिप्शन की रिवर्स की एल्गोरिथम अप्लाई करके n बिट्स प्लेन टेक्स्ट P1 फाइंड कर सकते हैं, P2 फाइंड कर सकते हैं, डैश 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 Pn. is the simplest mode of electronics code book. Message is broken. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के जो फीचर है प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक आर डिवाइडेड द प्लेन टेक्स्ट इनटू सेवरल नंबर ऑफ ब्लॉक व्हिच इज वेरिएबल लेंथ ब्लॉक यानी इंडिपेंडेंट ब्लॉक व्हिच आर encrypted. Message is broken into independent blocks which are encrypted. Now, each block is value which is substituted like a code book hence name. हर एक ब्लॉक का एक कोड बुक असाइन कर देते हैं. Each block is encoded independently of the other block. Suppose के CI I मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक को के की से एनक्रिप्ट कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट यूजिंग PI प्लेन टेक्स्ट को.
तो इसलिए each block are independent to each other. Uses secure transmission of single values. सिंगल वैल्यूज यानी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को यहाँ पे एनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं. एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक. मैसेज रिपीटिशन में shows in the ciphertext if aligned with message block, particularly with data such graphics or with message that change very little, which become a code book is analysis problem. Weakness is due to the encrypted message block being independent when used the sending few blocks of data. When use a sending a few block of data. तो ये इसकी एडवांटेज एंड वीकनेस है. नेक्स्ट जो मोड यूज करते हैं साइफर ब्लॉक चेनिंग CBC. इस वाले भी ब्लॉक में मैसेज इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स लिंक्ड टुगेदर इंक्रिप्शन ऑपरेशन. ये इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया कि इंक्रिप्शन ऑपरेशन एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे. Each previous cipher block is chained with the current plain text block and its name. Use initial vector IB to start process CI EK PI XOR operation CI-1 equal to IB. So each block are interlinked to next block. So it uses the block data encryption authentication. फिर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन कर लाइक दैट इन CBS मोड each plain text block is exclusive or the previous ciphertext block before the being encrypted. Like that P1 n bit को XOR operation apply किया in using K key 1 and n bit find over C1. Now this block is perform X operation of P2 n bits. After using this XOR operation is encrypted using the key K and find n bit G2. ब्लॉक इंडिपेंडेंट है लेकिन एक दूसरे को एनक्रिप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. IV मतलब इनिशियल वेक्टर. यूज इनिशियल वेक्टर टू स्टार्ट द प्रोसेस. सो CI1 using the initial vector. Here for initial permutation we use the XOR operation using the initial permutation. So P1, P2 dash 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 Pn are encrypted using the key K and each block produce the ciphertext, but each block is linked together of encryption process like that. C1 is input as P2 block and encrypted. Each block is performed XOR operation and encrypted. Next process decryption, the reverse operation of this process like that. Ciphertext C1 n bits are decrypted using K, perform XOR operation of initial vector, then find n bit plain text. Now this ciphertext is performed C2 decrypted and perform XOR operation find P2. The process reverse process chalta rahega. So message padding. At the end of message must handle the possible last short block, which is not a large block size of cipher. Pad either with known non-data value or pad last block along with the count pad size in 3 data types, then 5 bytes pad plus count. This may require an extra entire block over those in the message. There are other more historic modes which avoid the need of an extra block. So the feature way and advantage and limitation की बात करें सीबी तो ciphertext block depend on all block before it. Any change block affect all following ciphertext block. Need initialization vector which must be known to sender and receiver. If sent is clear, attacker can change bits of first block and change initial vector to compensate. Hence, initial vector must either be fixed value as in EFTPOS or must be sent encrypted in ECB mode before rest of message.
Now next is stream mode operation. In stream mode operation, block mode encrypted entire block may need to operate on a smaller unit like that real-time data. Convert block cipher into the stream cipher, cipher feedback mode, output feedback mode, and counter CTR mode. Use block cipher as some form of pseudo random number generator. So cipher feedback message is treated as a stream of bits added to output of the block cipher. Result is feedback for next stage. Standard allow any number of bit. So most efficient to use all bits block 64 to 128. Like that CI equal to PI XOR EK CI minus 1, CI minus initial vector using stream data encryption authentication. Cipher mode भी explain कर चुका हूँ. So in some situation we need to use data encryption standard or AS or secure cipher, but the plain text ciphertext block size are to be smaller. तो हम यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे. Suppose initial vector S1 n bit ciphertext I T at temporary registers SI shift register. To first SI shift register using the n bit shift register using the key data encrypt करने के बाद टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर हुआ. एंड आफ्टर दिस आर बिट K1 आर बिट के प्लेन टेक्स्ट के साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म करके C1 बिट आर बिट C1 में स्टोर हो गया. दिस C1 आर बिट is work as a input of next block shift register में स्टोर हुई. These are encrypted with the alpha of K. After this temporary encryption stores the temporary register, and these are bits plain text and K2 are perform XOR operation, and this is stored in C2, and next process is completed. So on. तो साइफर फीडबैक मोड जो यूज कर रहे हैं इसमें डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड AES as secure cipher, but the plain text and ciphertext block size are to be small. So different component use किया जैसे encryption, plain text block size E, so encrypt where E is equal to encryption, PI like the plain text block size A, E equal to secret key, T equal to decryption, CI is a ciphertext block I, IV initial vector S1, SI shift register, TI temporary. तो S1 इनिशियल वेक्टर n बिट लेके के रजिस्टर से इनक्रिप्ट किया, टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर किया R बिट प्लेन टेक्स्ट के साथ. अब जो यहाँ से हमें K1 बिट IR बिट्स उसके साथ XOR ऑपरेशन किया. आफ्टर अब XOR ऑपरेशन करने के बाद R बिट साइफर टेक्स्ट रिसीव हो गया आपको. दिस साइफर टेक्स्ट इज नेक्स्ट इनिशियल रजिस्टर n बिट रजिस्टर में एज ए वर्क एज ए इनपुट. These S2 encrypted with the alpha of key K, or after encryption this is stored in the register T2, and after register the R bits plain text perform XOR operation of this K2 R bits. After perform the XOR operation we find the ciphertext C2. This C2 apply the next shift register F3 and so on. The process is completed. So in CFB mode, in encipherment and decipherment use the encryption function of the underlying block cipher. The relation between plain text and ciphertext block is shown below like that. CI equal to PI XOR operation select left I EK shift left SI minus 1 CI minus 1. Decrypt pieces like that PI equal to CI XOR operation select left R EK shift
left are Si minus 1 mod Ci minus 1, like that. CFB is a stream cipher. So key generator Ci minus 1 n bit Si की यहाँ पे इनक्रिप्ट हुई और के आई आर बिट आर स्टोर आर बिट पी आई. सो इनक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनसिक्योर चैनल पे सेंड हो जाएगा एंड रिवर्स प्रोसेस यूज करके इसे डिक्रिप्ट प्रोसेस कर लेंगे. तो एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ CFB: appropriate when data arrive in bits of public bytes. Most common stream mode है. Limitation is needed stall which do block encrypted after every n bits. हर n bit के बाद इसमें encrypt करना पड़ रहा है. Note that the block cipher is used encryption mode at both ends. Error propagate for several blocks after the error. अगर किसी एक ब्लॉक में एरर है तो ये एरर प्रोपोगेट होती रहेगी several of other blocks. Next stream mode is equal to output feedback mode. Message is treated as a stream of bits. Output of cipher is added to the message. Like output is then feedback, hence name. Feedback is independent of message, can be computed in advance like that. OI encrypted by using key K OI minus 1. So CI equal to plain text PI XOR operation OI, and initial we use the OI O minus 1 output feedback initial vector for use for the noisy channel. In this mode, each bit in the ciphertext is independent of the previous bit or bits. This avoid the error propagation. ये यहाँ पे एडवांटेज है कि जो यहाँ पे एरर प्रोपोगेट हो रही थी प्रीवियस साइफर मोड में वो यहाँ पे नहीं होगी. सो ई सो द स्टैंड फॉर इनक्रिप्शन, PI stand for plain text block I, and K is the secret key. P is the stand for decryption, CI is the ciphertext block I, and IV initial vector SI equal to shift register, and TI is equal to temporary register. So in initial vector, apply shift register initial n bits, apply the key bit. After applying, we store the temporary register and R bit plain text, perform X operation and store in C1. Now, these R bit are work as an input of next block S2, n bits encrypted by using K key and store this temporary register, and these register R bits, and next plain text P2 R bits perform XR operation and store the ciphertext C2 R bits, and these R bit also is work as an input of the next shift register, and processes continue. So OFB as a stream cipher, like that R bit PI key register SIN bits encrypted by K key and store the key in the temporary register, and this temporary register R bit perform the R bit plain text XOR operation and store the ciphertext. This ciphertext is transferred with the help of insecure channel, and after receiving, the reverse process is applied for the decryption and receive the receiver. Advantage and limitation of this OFB: need initial vector which unique for each use. If every reuse attacker can recover output, bit error do not propagate. More vulnerable to message stream modification. Sender and receiver must remain synchronized, only used with the full block feedback. Next is the counter CTR. A new mode though proposed early on, similar to OFB, but encrypt counter value rather than any feedback value. Must have different key and counter value for every plaintext block, never reused. Like that,
OI encrypt by KI, CI equal to PI XOR operation of OI. Use high speed network encryption. अब इसमें देखिए सिमिलर है, केवल इसमें क्या बदला है, इन द काउंटर मोड देयर इज नो फीडबैक, द pseudo randoms in the key stream is achieved using a counter where E equal to encryption, PI equal to plain text, K equal to secret key, IV initial vector, CI is the ciphertext block I, PI equal to encryption key. The counter is incremented for each block. So initial vector n bits are encrypted by using key K encrypted. After encryption, we receive n bit K1, n bit plain text is perform XOR operation and then stores C bit. Now next block, n bits P2 counter n bits काउंटर काउंटर इस ब्लॉक इंक्रीज कर दे रहे हैं सिंपल ई के टू रिसीव होता है, उसके बाद एग्जॉर ऑपरेशन प्लेन टेक्स्ट पी टू जो एन बिट किए हैं, के टू एन बिट जो हमें यहाँ पे रिसीव हुए, इनके साथ एग्जॉर ऑपरेशन करने के बाद सी टू स्टोर कर लेते हैं। तो केवल यहाँ पे डिफरेंस क्या किया है, यहाँ पे ये जो फीडबैक प्रोवाइड करते थे यहाँ फीडबैक ना कि केवल यहाँ पे काउंटर इंक्रीज करते थे, या इनिशियल वेक्टर का काउंटर इंक्रीज कर दिया। तो इस ब्लॉक में काउंटर इज इंक्रीमेंटेड फॉर ईच ब्लॉक। तो काउंट CTR मोड एज स्ट्रीम साइफर लाइक दैट की जनरेट की जा रही है। की जनरेट करने के बाद हमारा यहाँ जो एन बिट की आई वो एन बिट प्लेन टेक्स्ट के साथ में एक्सऑर ऑपरेशन करके हमें साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ। दिस साइफर टेक्स्ट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ इनसिक्योर चैनल, और इनसिक्योर जो चैनल होगा ट्रांसमिट होगा एन बिट साइफर टेक्स्ट रिसीवर साइड रिसीव होगा। यहाँ पे डिक्रिप्शन की का रिवर्स यूज करके एन बिट पी आई प्लेन टेक्स्ट रिसीव हो जाएगा रिसीवर। So advantage limitation of CTR can do parallel encryption in hardware and software, can process in advance of need, good for rusty high speed link. Random access to encrypted data blocks हो जाएगा. Probable security good as other modes, but must ensure never reuse key counter value, otherwise could break the OF. तो कंपैरिजन समरी देख के अगर देखा जाए तो ECB each n bit block is encrypted independently with the same cipher keys. Block cipher जो होगा n bit का होगा, data unit size same as ECB, but each block is first exclusive ORed with the previous cipher text. Same है लेकिन इसमें केवल but each block is first exclusive ORed with the previous cipher text. CFB, each R bit block is exclusive ORed with an R bit key which is part of previous cipher text. Stream cipher, a block cipher, R less than equal to N. OFB same of CFB, but the shift register is updated by the previous R bit key stream cipher, R less than equal to N. CTR same of OFB, but a counter is used instead of shift register stream cipher N. So this is summary operation of different mode. Thank you. The next lecture we will discuss about in the second unit.